photosynthesis. What do you mean by the word photon? Photon means होता है light. Synthesis means what? Formation of complex molecule from simple substance. What is a photosynthesis? It is the process of formation of complex molecule from simple substances. Simple चीजों से complex चीज बनाना by using light energy. ये as per name के हिसाब से. But we have a proper definition. There are two definitions. I will give you two definitions. Okay. First definition is it is a biochemical process. कौन सा process है? Biochemical process. What is a photosynthesis? It is the biochemical process. Bio means what? Living. Okay. Chemical means what? Chemical reaction. Okay. So it is a biochemical process. ये क्या है? Biochemical process in which जिसमें green plants, इसमें green plants. It is a biochemical process. A biochemical process in which green plants takes क्या लेता है? Light from sun, carbon dioxide from air or atmosphere, water from soil. Water soil में होता है in presence of chlorophyll. Chlorophyll के presence में, ठीक है? Prepare their own food. क्या? Prepare their own food. So, what is the photosynthesis? Photosynthesis is the biochemical process. It is a biochemical process in which green plants take light from the sun, air or carbon dioxide from the air or atmosphere, light from sun, carbon dioxide from air or atmosphere, water from the soil, जमीन से, in presence of light, sunlight, in presence of chlorophyll, sunlight, water and carbon dioxide. Chlorophyll भी तो चाहिए. So ये definition. It has another definition. Another definition we have. See, पहले definition के पहले let us do the reaction of photosynthesis. Reaction of photosynthesis. Photosynthesis का reaction क्या होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और क्या होता है? वाटर होता है. आपस में रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल. क्या बनाते हैं? उनका फूड, दैट इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. प्लांट लूजेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ना. सो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए इधर 6, इधर 12, इधर 6 और इधर 6. ये केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन. तो ये क्या बोलना चाहते हैं? इस रिएक्शन से ये प्रोडक्ट आता है. ये है ग्लूकोज, ये है ऑक्सीजन और दिस इज वाटर, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. हम लोग सांस लेते हैं, वी ब्रीथ आउट. विंटर में जाना एकदम कोल्ड कंट्री में, वहां पे देखना वेपर्स निकलेगा मुंह से. तो वी गिव आउट वाटर वेपर. प्लांट आल्सो गिव्स आउट वाटर वेपर, but that process is called as transpiration. That is called as transpiration. देखो वाटर निकलेगा in the form of water vapor.
सो इसका एक और डेफिनेशन है that it is a redox reaction. क्या है? It is a redox reaction. Now what is the redox reaction? तुमने पढ़ा है 10th में, rid मतलब reduction, ox मतलब oxidation, in which reduction and oxidation takes place at once, एक ही टाइम पे, in which carbon dioxide undergo reduction, water undergo oxidation. ठीक है? It is the redox reaction in which CO2 undergoes reduction and water undergoes oxidation. इसमें आता है oxidation in presence of light and chlorophyll. Chlorophyll prepares glucose as a main product and oxygen and water vapor as a byproduct. ठीक है? क्या है? It is the redox reaction in which carbon dioxide undergo reduction, water undergo oxidation in presence of sunlight, and chlorophyll prepares glucose as a main product, water vapor and oxygen as a byproduct. I hope you understand the definition. एक बार फिर से explain करता हूँ. It is the redox reaction. It is the redox reaction in which carbon dioxide undergo reduction reaction, water undergoes oxidation reaction in presence of light and chlorophyll, prepares glucose as a main product, oxygen and water vapor as a byproduct. I repeat, it is the redox reaction in which carbon dioxide undergoes reduction, water undergoes oxidation in presence of light and chlorophyll, prepares glucose as a main product, water vapor and oxygen as a byproduct. समझ में आया? So what we have, another topic is phosphorylation. What is the phosphorylation? What is the phosphorylation? It is the process in which ADP combines with inorganic phosphate to form ATP. Simple word. ADP plus IP forms ATP. Okay? It is the process in which ADP, there are AMP. AMP is adenosine monophosphate. Okay, so ADP कितना होगा? Adenosine diphosphate. ATP क्या होगा? Adenosine triphosphate. So ये एक प्रोसेस है जिसमें ADP combines, plus मतलब क्या? Combines with IP, that is inorganic phosphate. IP, I का मतलब होता है inorganic phosphate, inorganic phosphate. It is a process in which ADP combines with inorganic phosphate. The formula is H3PO4. It is phosphoric acid. ठीक है? It is phosphoric acid. ठीक है? ADP combines with inorganic. Is there any carbon in this? कोई कार्बन दिख रहा है इसमें? नहीं ना? So it is inorganic, without carbon. So ADP combines with inorganic phosphate to form ATP. Is called as phosphorylation. If the reaction takes place in presence of light, अगर ये दोनों को जोड़ने के लिए लाइट की जरूरत पड़ी, मतलब सिंपल है कि ADP combines with
inorganic phosphate in presence of to form ATP, the reaction takes place in presence of light. Then it is called as photophosphorylation. मतलब to join them, energy कौन provide किया? Light ने. So light को बोलते photo, photophosphorylation. And if the reaction takes place in presence of oxygen, ADP combines with inorganic phosphate to form ATP in presence of oxygen. Oxygen के सामने हुआ, then it is called as photophosphate. इसको क्या बोलेंगे? नहीं, फोटो नहीं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन. ऑक्सीडेटिव phosphorylation. What is oxidative phosphorylation? When ADP combines with inorganic phosphate in presence of oxygen, it is called as form ATP. Is called as oxidative phosphorylation. Now, what is the structure of ATP? हम लोग ATP बोल रहे हैं. वो दिखता कैसा है? करते हैं. Structure of ATP. It is made up of ribose sugar. सुना ना, RNA में रहता है, प्लस एडेनिन प्लस 3-phosphate. That is, ये दोनों को हम बोलते हैं एडिनोसिन. ये दोनों को क्या बोलते हैं? एडिनोसिन. क्या बोलते हैं? एडिनोसिन. इसका अगर तुम ड्रॉ करोगे तो राइबोज शुगर इज अ पेंटोज शुगर. कैसा रहेगा? 1 2 3 4 5. पेंटोज शुगर में, राइबोज शुगर में कैसा रहता है? OH OH. H3PO4 रहेगा. इधर तुम्हारा आएगा एडेनिन. क्या रहेगा? एडेनिन. तो ये तुम्हारा नंबरिंग चालू कर दो. मैं नंबर इज समथिंग लाइक फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन. तो फर्स्ट को एडेनिन अटैच. तो ये क्या हो गया तुम्हारा? एडिनोसिन. क्या हो गया? एडिनोसिन. और एक फॉस्फोरस है तो मोनोफॉस्फेट. 2 हो गया तो डाइफॉस्फेट. 3 हो गया तो ट्राइफॉस्फेट. आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. मैंने बहुत डिटेल में बताया.